Okay, now I want you guys to actually tell me कि true value क्या होती है? It is It is basically basically the original the value. original value. Yes, that's a good way to put it. किसी भी चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं. लेट्स से एक बॉल का मास है 50 grams. That would be the true value of it. लेकिन in real life, when we measure things, it's not always possible. It's mostly not possible to get the exact true value. उसकी वजह क्या है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में फ्लॉज होते हैं. उन फ्लॉज या एरर्स से आपकी ट्रू वैल्यू से ऊपर नीचे मेजरमेंट हो जाती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एरर्स. अगर तो आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, that gives you something called systematic error. Where does that come from? It comes from your faulty instrument. अगर इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो तो आपको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं उसको. उससे क्या होता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ऊपर नीचे हो जाती है बाय अ गुड डिग्री. ओके, और उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू recalibrate our instrument. Recalibration क्या होती है? We need to fix that problem. And most of the times, the systematic error is a fixed amount. अगर आपके methodology में problem है, that is a random error. And you can repeat your experiment, take multiple values, and take an average of those values to get a more accurate answer. Okay? And then we just discussed accuracy and precision. और उन एरर्स की वजह से आपकी मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटीज आती हैं. और हमने 3 तरह की अनसर्टेनिटीज देखी हैं. We saw absolute, fractional, and percentage uncertainty. And we saw if you have like a box and you're measuring the length of the box, then let's say आपकी जो measured value आई है वो 12.5 है. To write the uncertainty of this length, आप क्या करेंगे? आप इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन देखेंगे. इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन क्या है? It's the smallest fraction that this instrument can measure. और हमें पता है कि एक रूलर 0.1 सेंटीमीटर तक स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है. आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे और आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटीज जो इंट्रोड्यूस होती है वो आ जाएगी. And you're going to write your answer as 12.5 plus minus 0.05 centimeters. So this, Ma'am? yes, Ma'am, Ma'am, is is this this fractional uncertainty? uncertainty? this is absolute uncertainty. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Sorry, what Ma'am, did इसको fractional में divide होगा. फ्रैक्शनल में? यस, फ्रैक्शनल में आप अपनी अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे. So when you take your uncertainty 0.05 and you divide that by your measured value, length कितनी measure किया आपने? 12.5. आप जब अनसर्टेनिटी को उस लेंथ से डिवाइड करेंगे, मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 100%, तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी. Is that clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Ma'am, Ma'am, Yes. can you scroll up can you to the scroll up to the definition of definition of uncertainty? uncertainty? Mm. Yep, there you go. Thank you. Once you're done, let me know and we'll move on.
लेट्स से कि आपकी ट्रू वैल्यू 50 ग्राम्स थी एंड यू मेजर्ड इट टू बी 50.5. इनमें कितना फर्क है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में 0.5 का, राइट? जी। इट मीन्स कि इफ यू राइट योर मेजर्ड वैल्यू 50 प्लस माइनस 0.5, इसका मतलब है कि आपकी ट्रू वैल्यू लाइज विद इन दिस रेंज. अगर ये 50 है and you measured 50.5 और let's say opposite end पे आप measure करते हैं 49.5, so आपकी जो true value है वो 49.5 और 50.5 के कहीं भी दरमियान में हो सकती है. So uncertainty आपको बताता है कि वो range कितनी है जिसके बाहर आपकी true value नहीं होगी. Okay? So actually there's multiple ways to define it. उसकी कोई एक specific definition नहीं है. There's multiple ways of describing what an uncertainty is. अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहना चाहें तो अनसर्टेनिटी क्या है कि आपकी ट्रू वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट हो रही है आपकी मेजर्ड वैल्यू, वो आपकी अनसर्टेनिटी है. और इसको फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग. अगर आप एक रूलर से लेंथ मेजर करें तो आपकी अनसर्टेनिटी उसकी प्रिसिजन को डिवाइड करके 2 से मिलेगी आपको. अगर आपने मल्टीपल मेजरमेंट्स किए हैं तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो उस मेजरमेंट में और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस कितना है वो आपकी अनसर्टेनिटी होगी. Is that a little better now? Yes, ma'am. Or is it still confusing? No confusion. Okay. I think it will be much better if we practice a little bit. Before that, I wanted to cover this concept of adding or subtracting uncertainties. Okay. Let's take an example. अगर आपके पास कोई भी दो values हैं that have an associated uncertainty. Let's say you have the first object of object 1 जिसका mass है 50 plus minus 0.5 grams. And you have another object, object 2, जिसका mass है 20 plus minus 0.2 grams. आपके पास दो measurements हैं और उन दोनों के साथ uncertainties associated हैं. Okay? पहली measurement जिस ऑब्जेक्ट के मास की मेजरमेंट है इट्स 50 ग्राम्स और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 20 ग्राम्स और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2. एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द सम ऑफ दीज टू masses. जब आपके पास दो वैल्यूज गिवन हो और आपसे उनका सम पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? You're just going to add the masses. 50 plus 20 is 70. The problem is कि they have associated uncertainties with them as well. अब मुझे बताएं कि ये जो numbers हैं ये कौन सी uncertainty है? Absolute, fractional या फिर percentage? Absolute. Excellent, that's right. तो जब आपको दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए कहा जाए तो आप उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को भी ऐड कर देंगे सिंपली. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 50 प्लस माइनस 0.7 ग्राम्स. सो अगर क्वेश्चन कहे कि व्हाट्स द सम ऑफ दीज टू वैल्यूज, यू आर जस्ट गोइंग टू सम और ऐड देयर masses and you're going to add their absolute uncertainties as well. लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन the two masses, तो आप क्या करेंगे? You're going to take away the mass of one from another. If you take away 20, it's going to be 30 grams. What do you guys think will happen to the uncertainty?
Subtract. दैट इज इंटुइशनल, लेकिन अनसर्टनिटीज को हमेशा ऐड करता है। ये बस आपने याद रखना है, इट्स अ रूल कि अनसर्टनिटी को हमेशा आपने ऐड करना है। यहाँ पर भी हम इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज को ऐड ही करेंगे, 0.7 grams. So what did you guys learn? कि whenever you're adding or subtracting two values जिनकी अपनी अपनी uncertainties हैं, तो uncertainties को ऐड ही करना है in every case. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whenever you have two values with associated uncertainties, if asked to find sum, add the two values. ये तो like it's very basic. If asked to find difference, subtract the two values. लेकिन दोनों cases में, in both cases, addition हो या subtraction, always add the absolute uncertainties. Is that clear? Uncertainties को हमेशा add ही करना होता है. Is there any confusion? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am. for example, we have For example, we have a fixed uncertainty fixed here. What uncertainty if here. it was What a if it was fractional a fractional uncertainty? uncertainty? Reported data के साथ like इस तरह के values में आपको fractional uncertainties नहीं देता. You will have an absolute uncertainty associated with your answer. So I don't think you'll have a problem with that. So you don't have to worry about that, inshallah. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's see कि fractional uncertainties या percentage uncertainties कहाँ पर आती हैं. Okay. Let's take an example of that now. Let's say you have a car or any object, oops, and it's traveling at some speed v. Okay, let's say आपको ये information given है, like you're given the distance traveled by this object and you're given the time taken by the object to travel. Let's say कि distance आपको given है 20 plus minus, wait, 20.0 plus minus 0.1 centimeters or meters. And time is 2.00 plus minus 0.05 seconds. Okay? Let's say आपको ये information given है, उन्होंने आपको distance भी बता दिया है और उन्होंने आपको time भी दे दिया है एक object के travel का. And they're asking you to find the velocity or speed of the object. Speed find करनी है बाद में. सबसे पहली बात ये कि speed का formula क्या है? Distance over time. Distance over time. Excellent. Distance traveled over time taken. तो यहाँ पर आपकी दोनों values क्या हो रही है? Like you're dividing one by another. Speed का magnitude तो simple होगा. Distance 20 है, time taken कितना है? 2. Speed तो आपके पास आ गई directly 10 meters per second. But how do you find the uncertainty? We're going to see that now. जब आपके पास इस तरह दो values given हैं again जिनकी अपनी अपनी uncertainty है and you're dividing one by another, यहाँ पर
you're going to add their fractional uncertainties. ठीक है? Let's formulate a formula now. ये आपने ये हमेशा इसके कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला बनाना सीखना है हमने कि कैसे बनाना है. ओके इसमें क्या कहते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल उस टर्म का फॉर्मूला है आपने उससे डिराइव करना है अनसर्टेनिटीज का फॉर्मूला. ओके इट्स प्रीटी सिंपल. आई टीच यू दैट. लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म है स्पीड. ओके सो यू आर गोइंग टू राइट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फॉर दिस. स्पीड की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्पीड की. ओके डेल्टा यूज करते हैं हम. ये ट्रायंगल सिंबल जो है ये हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. तो आपने स्पीड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय स्पीड का मैग्नीट्यूड. ये किसका ये क्या है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है राइट. Can you guys hear me? Hello? यस मैम. Okay. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम फॉर्मूला डिराइव करने लगे हैं स्पीड की अनसर्टेनिटी का. आपने इस ओरिजिनल फॉर्मूला में हर टर्म को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिख लेना. लेफ्ट साइड पे आपके पास है ही एक टर्म, सिर्फ स्पीड है, तो आपने स्पीड को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिख लिया. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से डिवाइडेड बाय स्पीड का अपना मैग्नीट्यूड. दैट इज इक्वल टू Ma'am, delta is representing absolute uncertainty. yes, delta V represents absolute uncertainty. डेल्टा जो सिंपल है वो हम अनसर्टेनिटी के लिए यूज करते हैं. ओके यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हैं, डिस्टेंस है और टाइम. पहले हम इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को सेपरेटली लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इनका करना क्या है. ओके हुसैन कैन यू टेल मी कि डिस्टेंस की एब्सोल्यूट सॉरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे? You 0.1 divided by 50. Yep, that's great, excellent. Let's write it in terms of alphabets first. आपने बिल्कुल ठीक कहा है. उसकी absolute uncertainty delta D over उसकी measured quantity D. Okay, Zen, can you tell me कि इस फॉर्म में टाइम की fractional uncertainty को कैसे लिखेंगे? मैम डेल्टा डिवाइडेड बाय टी. Yes, excellent, delta T by T. अब जो हमने पीछे रूल पढ़ा था कि अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं, यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो गया कि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज हैं. फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज भी हमेशा ऐड होती हैं. ओके सो आपने इस ओरिजिनल फॉर्मूला से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का फॉर्मूला बना लिया. पहले आपको इससे चाहिए क्या? आपको स्पीड की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए राइट. You need this thing Yes, right ma'am. here. You need this. So you're going to take this velocity or speed v to the other side. अब क्योंकि ये पूरे से multiply होना है, you have to put this bracket like that, and you'll get delta v is equal to delta d over d plus delta t over t. This whole thing is going to be multiplied by v. ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी का. लेट मी रिकैप द होल थिंग. क्वेश्चन क्या था? आपने स्पीड फाइंड करनी थी डिस्टेंस और टाइम से. ठीक है, डिस्टेंस आपके पास 20 था, टाइम आपके पास 2 था, लेकिन इन दोनों के साथ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड है. स्पीड तो आपने डायरेक्टली फाइंड कर ली, डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन अब इन अनसर्टेनिटीज को क्या करना है? वी हैव टू सी दैट.
उसके लिए यहाँ पर आप डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। जब भी आपकी टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी तो आप अनसर्टेनिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ओरिजिनल फॉर्मूला से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा इस तरह, and then you will find your absolute uncertainty for that unknown quantity from there. ठीक है? आप again I'll repeat that. जब आपकी टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो आप उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। You're going to formulate this relationship from your original formula as fractional uncertainties, और उससे आपने अपनी इक्वेशन को आइसोलेट करना है, सॉरी रीअरेंज करना है टू आइसोलेट इट फॉर दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. For For example, example, on the right on the side right of the side of equation, the तो ये जो Jesus स्टेप kept वो भी राइट साइड पे आएगा। Say that again. Can you repeat that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can you repeat your question, please? मैम it was Ma'am, it basically was कि basically कि ये जो स्पीड है ये जो राइट स्पीड साइड है पे राइट मतलब साइड पे इक्वेशन मतलब के इक्वेशन वन के साइड पे, वन साइड तो पे, हमने तो से हमने से उसकी जो उसकी जो अनसर्टेनिटी थी अनसर्टेनिटी थी उसको भी उसको भी एक एक राइट साइड पे राइट साइड पे रीच किया। रीच किया। हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर लिया। मेथड क्या है कि हर टर्म की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपने लिख लेनी है। अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो उनको ऐड कर लेना। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर फाइंडिंग दिस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इसलिए वेलोसिटी को आप दूसरी साइड पर लेके हैं, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए वेलोसिटी, आपको एब्सोल्यूट चाहिए। सो यू टुक दिस वेलोसिटी टू द अदर साइड बिकॉज दैट्स योर एंड गोल। आप फाइंड क्या कर रहे हैं? आपको स्पीड का तो मिलके मैग्नीट्यूड 10, अब इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? प्लस माइनस दिस नंबर, जो कि आपको इस रिलेशनशिप से मिलेगी। सो डेल्टा डी कितना है? 0.1, और डी कितना है? 20। सो 0.1/20 प्लस डेल्टा टी कितना है? 0.05 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 2। सो लेट्स सी दैट 0.1/20, 0.1/20, 0.005 प्लस 0.05/2 0.03, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से, सॉरी स्पीड से, जो कि 10 है, इंटू 10। मैम यस मैम मैम जो यहाँ तो यहाँ तो अनसर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी तो तो मीन्स कि मीन्स हम के हम पॉइंट वन पॉइंट को वन को डिवाइड बाय डिवाइड टू बाय नहीं 2 नहीं करेंगे। करेंगे। 0.1 divided by 2 delta d over d. 0.1 is your absolute uncertainty divided by your measured quantity 20. डेल्टा डी क्या है? डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ओके जी मैम। डी क्या है? इट्स द मेजर्ड डिस्टेंस 20। सो 0.1/20 प्लस डेल्टा टी 0.05/2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0.3। सो आपका फाइनल आंसर कितना है? 10 plus minus 0.3 meters per second. Okay, let me recap the whole thing. Let me write it down in words. एक तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आपके पास 2 वैल्यूज हों जिनकी अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड हो, तो अगर तो उन 2 वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का कहा जाए तो आप उनकी अनसर्टेनिटीज को भी डायरेक्टली ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपकी 2 टर्म्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़े
यहाँ पर जो दो टर्म्स गिवन थी, दो मेजर्ड वैल्यूज गिवन है, उनको डिवाइड करना पड़ा है या फिर अगर उनको मल्टीप्लाई करना पड़े तो यू कैंट डायरेक्टली एड देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस ओरिजिनल फॉर्मूला से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का रिलेशन बनाना पड़ेगा और इस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप से आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। डू वी गेट दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, I have a I have a question. question. Yes. Okay, for Okay, example, for अगर हमारे example, पास अगर दो हमारे पास दो absolute एब्सोल्यूट uncertainties हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन उन लेकिन दोनों उन का दोनों का unit यूनिट different है, डिफरेंट है, so can so we can add we them? add them? Absolute uncertainty with different units. No. क्योंकि एडिशन जो है इट्स उसके लिए जरूरी है कि टर्म्स सेम हो। अगर लेट्स से आप लेट्स सी व्हाट द सिचुएशन मींस जो आप कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास टर्म है मास और एक टर्म है टाइम। ओके, यूनिट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर यूनिट ग्राम्स में है इट मीन्स कि आपकी क्वांटिटी मास है। अगर यूनिट सेकेंड्स है तो आपकी क्वांटिटी टाइम है। तो डू यू थिंक इट्स रीजनेबल टू ऐड मास एंड टाइम? No, ma'am. No, ma'am. इस केस इस में नहीं, केस में नहीं, लेकिन for लेकिन फॉर example, if we एग्जांपल इफ have वी हैव grams and ग्राम्स एंड kgs, केजीस, Yes, उसमें भी आप नहीं कर like that one. Yes, you can do that. Let's say if you have 50 kilograms or 50 grams and you have 1 kg, उसके लिए बस ये जरूरी है कि आप इसको उस यूनिट में कन्वर्ट कर लें। So you would just divide 50 by, let's say, 1000, and that's going to be 0.05 kilograms. And you have 1 kilogram, then you can add them. It's important to have consistent prefixes as well. Is that clear? yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि अगर आप 1 को 50 में ऐड कर देंगे तो वो तो 51 बन जाएगा and that is not very sensible, right? So yes, it's important to have consistent prefixes. अगर kilo है तो both of them need to be in kilo and so on. All good? Yes, ma'am. यस मैम। Let's take another example. Let's say that there is this box और इसको right side पर push करते हैं, okay? And that push or that force F is 20 newtons. And let's say it moves a distance of 2 meters. Okay. So the measured force is 20 newtons plus minus, let's say 0.3. 20 plus minus 0.3. And just remember कि जो decimal places हैं measured quantity के और uncertainty के वो भी consistent होने चाहिए. Okay? अगर ये 1 decimal place है तो उसको भी आपने 1 decimal place पे लिखना है 0.0. Okay? Alright. और distance के लिए है 2 plus minus 2.0 plus minus 0.1 meters. ठीक है? आपके पास force given है with its uncertainty और आपके Ma'am, पास distance given है with its uncertainty. Yes? that's why you That's are why you are writing writing 20.0 20.0 instead of instead just of just 20. 20. Yes. That's right. इसके साथ consistent रहने के लिए. It's important to be consistent with these two. Okay? अच्छा, आपके पास force given है और distance given है and they ask you to find the work done on this box. Work done का formula, Zan, can you tell me what's the formula for work done?
Ma'am, distance, sorry, post updated please. एक्सलेंट. अच्छा, पिछले एग्जाम्पल में आपकी टर्म्स डिवाइड हो रही थी, इस एग्जाम्पल में आपकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं. सो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो बहुत सिंपल है ना, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट? 40 newtons. Now, how do you write the uncertainty? Husnain, can I add these two directly? No, we No, will we add will add its its fractional fractional uncertainty. uncertainty. Excellent. Okay, आप मुझे fraction uncertainty का relation बता सकते हैं from this one? Yes, Yes, delta delta W over W over W, W, true value true of value of W, W is Measured. equals is to equals to Delta F over, yep, F. Remember कि ये measured values हैं, okay? Multiply, oh, not multiply. यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे? Zain, can you continue this? Ma'am, ma'am in in delta D delta over D over D. D. Yes, plus delta D over D. मैम Husnain, व्हाट मैम यू वर what you were सेइंग कि saying ये कि मेजर्ड measured वैल्यूज क्या values क्या हैं, है? W W मेजर्ड measured वैल्यू नहीं है. value नहीं है? yes, I'm saying कि ये measured values हैं. These are not, it's not very reasonable to call them true values. It's much better to call them measured values because that's what you measured. Yes, Yes. F and D are your measured values, and W will be your derived quantity from these two. Okay, anyways, that's a different subject. Let's continue with this now. Okay, so, Husnain, यहाँ पर, can you tell me what numbers to plug in and what are we actually finding? yes, Yes, we will we will place place um um 40 40 instead of instead of W, W, Yep, that's right. and we are and we are finding finding so so finding finding the delta delta W. W. Yep, that's right. So delta F is 0.3 over F is 20 plus delta D is 0.1 over D is 2. And then here we have W, which is 40. And then I'll just solve this side. 0.3 over 20 plus 0.1 over 2. Point 0.065. Okay, next क्या करना है? What's next? We'll We'll multiply it. multiply it With? So what should I write here? Um, zero point 0.65 six five multiplied by multiplied by 40. 40. Yes, 0.065 into 40 into, that's 2.6. तो आपके पास absolute uncertainty आ गई है work done की. So your final answer will be 40. Can you, okay, uncertainty had 2.6. Zain, can you tell me के final answer कैसे लिखेंगे? Um, 40 plus 40 my plus my Ma'am, मैम 2.5 का 2.5 सब का सब जाओगे जाओ जाएगा. And this will be 40.0. 40.0 plus minus 2.6 joules. Is correct. Okay. So is that clear so far? yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, have you done have you this done this calculation calculation mentally? mentally? No. I used a calculator. मैम मैम Yes? मैम एक मैम दफा एक दफा 2.5 पे 2.5 क्या पे हुआ? क्या हुआ? Sorry? मैम ये मैम ये sorry sorry 2.6 क्या 2.6 हुआ? क्या होता है? Say, sorry, I couldn't hear that.
मैम ये मैम ये लास्ट में लास्ट में 2.6 कैसे आया? कैसे आया? 2.6 ये जो फॉर्मूला था, delta W over W is equals to delta F over F plus delta D over D. इसमें we found this portion. मैम मैम जी जी GT जी को मैंने वो मैंने 40 वाला इंटू 40 करना चाहिए था। Yes, and then you multiply that by 40, and you get 2.6. And that's your absolute uncertainty. So 40.0 plus minus 2.6 joules. Perfect? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. अच्छा, अभी तक हमने क्या सीखा? Let me recap that. कि अगर आपके पास two quantities given हो और उनकी absolute uncertainties given हो, and if they ask you to add or subtract those two quantities, तो आप उनकी absolute uncertainties को directly add कर देंगे। लेकिन अगर वो कहें आपको कि इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो आप उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज वाला। उस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाले रिलेशन से यू विल फाइंड योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फॉर दैट अननोन टर्म। इज दैट क्लियर? यस मैम। Let's do one last example for this. और यहाँ पर हम पावर रूल देखेंगे। पावर रूल इन अनसर्टेनिटीज। We'll have to be a little quick. We have 15 minutes for this session. Okay. All right. Let's say there is, let's say, an object जिसका रेडियस बल्कि कह लेते हैं, डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं। सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं फॉर अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। लेट्स अज्यूम इट्स अ परफेक्ट सर्कल। ओके, सॉरी। सो लेट्स से आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है या कोई भी कुछ भी सर्कुलर, एंड the distance from the center of the circle to the boundary, not the boundary or the circumference, इसको हम रेडियस कहेंगे। तो इसका रेडियस उन्होंने आपको दे दिया। ओके, लेट्स से इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस है 2.5 with an associated uncertainty plus minus 0.02. हुसनैन, कैन यू टेल मी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में? यस Yes, यहाँ पे है ना यहाँ पे है ना 2.50। 2.50. Yep, that's right. It will be 2.50. Okay, आपको रेडियस गिवन है and they ask you to find the volume of this circular object. ठीक है, सबसे पहले आपको बस ये बताना चाहिए कि जब आप वॉल्यूम लिखेंगे तो एक तो आपकी measured value होगी and then you will have plus minus your absolute uncertainty associated with it. ठीक है, ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर you'll get the unit. अच्छा, पहले हम फॉर्मूला से डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस फॉर्मूला से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का रिलेशन डिराइव करेंगे, उस रिलेशन से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आइसोलेट करके उसको फाइंड करेंगे एंड देन विल प्लग दैट इन हियर। आर यू गाइस फॉलोइंग अलोंग विद दैट? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. So, Zen, can you remember what's the formula for volume of a circle? It's okay if you don't. मैम इट इज पाई। That's good. That's the area of a circle. एक circular object का volume का formula होता है 4/3 pi r cube, and I want you guys to remember that. मैम ये तो स्केल है। Yes, volume. When I say volume of a circular object, I essentially mean a sphere, क्योंकि volume होता ही 3D objects का, okay? 2D objects का area होता है,
And I should have used the term sphere. You're right. I was implying pretty much the same idea, but I think I should use sphere. That's much better. So volume of the sphere is 4 over 3 pi r cubed. Volume की value find करने के लिए we can directly plug in this number. Do you guys have calculators? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can you tell me what do you get for this? मैम, Ma'am? Yes? कि जितनी शेप से कुछ आके बंद हो जाती है तो फॉर्मूला में 1/3 आता है. जितनी shapes को क्या होता है? ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल कॉन. Hmm. Yeah, that's interesting. I didn't know it applies to all shapes, but that's new. That's good. Ma'am, Ma'am, 26.179. 26.179. Let me see. 4 over 3. 5 into r cubed. R is 2.5 cubed. I got 65.5. Maybe did you cube it? So, ma'am, You missed the cube? ma'am, मैंने इसका square ले लिया था. Oh, okay. Yeah, that's okay. So remember, it's a cube for this one. So you get 65.5 centimeters cubed. Okay. So ये तो direct simple सा था 65.5. Now we have to find uncertainty relationship. Let's do this together. So let's who answered the last question? Zen. Okay. So Zain answered the last one. Husnain, what should I write on the left side? V. Delta V over V. Very good. Actual value V. Delta V over V. And on the right side? R आएगा only R. Delta R over V. Sorry. Delta R over R. Yep, that's very close. Excellent. So, पहला point तो like you're very right कि ये जो constants हैं 4 over 3 or pi, these are constants. A constant is any fixed number. उनको हम uncertainties में ignore कर देंगे. So in your uncertainty relationship, you're going to ignore this whole term. Okay? But pi does not have a fixed value. But it's a constant. Like if you keep on going, actually you're so right. I can't say it's a fixed value, but it sort of is a constant number. Like it's not going to change. कोई भी चीज जो change नहीं होती उसको हम constant कह सकते हैं. Okay? Yes. Okay, what's next? R cube. Yep. So sorry. Yeah. So instead, actually, before we move on to this, pi does have a fixed value. इसकी बात आप we can say कि ये whole number नहीं है, but it doesn't matter how many decimal places you take. You can go for as many times as you want. लेकिन उसकी value fixed ही है. Okay? Yes. Pi की value change नहीं होगी. It has a fixed and unchanging value. Just a minute. Alright, yes. So we were saying कि constants को हम अपने uncertainty relationship में ignore कर देंगे. 4 over 3 is a constant number, pi is a constant number. Pi के decimal places infinite हैं, but they're constant. Okay? So next you have r cubed. Delta r over r to आगे. The new thing to learn here is that this power is going to become
a multiple. Like you're going to multiply this with your fractional uncertainty. ठीक है? Power को आपने multiply कर देना आपकी fractional uncertainty से. That is the rule here. Okay? So जहां पर भी आपको किसी टर्म पे पावर नजर आएगी आपने उसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना. इज दैट क्लियर? Yes, Ma'am, ma'am. for For example, example, if we if have we have another another value value here, here, we will we will multiply its multiply its power. power. Okay, let's take an example. Let's say आपके पास एक फॉर्मूला है x is equals to y squared multiplied by z cubed. ठीक है? इसमें आप क्या करेंगे? डेल्टा x over x is equals to delta y over y और इसकी पावर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड देन यू विल डू प्लस दूसरे के साथ ये करेंगे डेल्टा z over z multiplied by 3. Very good. Is that clear now? Yes. Yes. जिसकी पावर होगी वो उसकी fractional uncertainty से मल्टीप्लाई हो जाएगी. Here comes here and this one comes here. All good? Yes. Yes. Okay. Now I want you guys to plug in the appropriate numbers and tell me what you get for delta v. I want you both to calculate them and drop your answers in the chat box. Ma'am, Yep, are you done? ma'am, मैम 2.5 का 2.5 का रूट लेंगे रूट हम लेंगे हम आर के लिए. आर के लिए. R? No. You will just plug in the direct numbers. Delta V over V into 3 multiplied by delta R. Delta R की value कितनी है? 0.02. 0.02. 0.02. Yes, and then you will divide that by 2.5. And then जब ये आ जाएगा तो आप उस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. It's It's 1.572. 1.572. Excellent. That is correct. 5.7. 1.57. 1.57. And then, what do you think is going to be the unit here? Ma'am, मैम 1.572. 1.572. Yes, वो तो ठीक है. लेकिन यूनिट क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, मैम मैम, it will be it will be centimeter cube. centimeter cube. Yes, centimeters cubed. Okay, excellent. Ma'am, Ma'am? Yep. what if What if we we multiply multiply delta delta R R multiplied by multiplied by 3, 3, then we'll then divide we'll it? divide it? एक ही आंसर आएगा. And then you can write 50 here just to be consistent. वैसे मेरे ख्याल में मैंने round किया था. It was I think 65.4 something. So make sure you're accurate with your answers. All right. Is there any question or confusion here? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Just a minute. Okay, let's do a quick recap. Ma'am, Ma'am?
Yes? Can we do Can we like do one like one question for question for percentage percentage uncertainty? uncertainty? Yes, absolutely. इसको ही continue कर सकते हैं हम. What if they asked you to give the answer in percentage uncertainty? It's very simple. कि आपने सिर्फ बस 1.57, that is your absolute uncertainty, right? And that's your measured value, right? What if they ask you to give the percentage uncertainty in volume? So, do you guys remember the formula for percentage uncertainty? Fractional Ma'am, uncertainty answer minus to uncertainty into 100. Yes, that's right. Excellent. Both of you are right. So, इसकी fractional uncertainty क्या होगी? 1.57 absolute over this term. So, 1.57 over 65.5 into 100%. So that's going to be, let me do it now, 1.57 over 65.5. That's going to be 2.39 or 2.4. 2.4%. All good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. Let's take a 10 minutes break.